Hello everyone, welcome to Anupama Kumari tutorial. Today we will discuss poem 2 Wind Behind Poem Class 9. This is a very well known poem and a very good poem with a good moral lesson for us, and it has a very marvelous theme. अरे यार प्लीज़ लाइक भी ठोक देना मेरे वीडियो के लिए। और ये बोथ हिंदी और हिंदी दोनों, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों एक्सप्लेनेशंस रहेंगे। इंग्लिश को इंग्लिश लैंग्वेज में समझने की ज़्यादा अच्छी बात होती है, उससे हमारी लैंग्वेज स्किल डेवलप होती है। तो नाउ let me tell you what are the benefits of reading habits. You would able to enhance vocabulary with when you will be subscribed and be with our channel in Makuma tutorial. It will increase. You will be able to increase concentration level and you will be able to kindle empathy and emotion. तुम्हारे अंदर भावनाएं जागृत होंगी पढ़ने से इंग्लिश हमारे अंदर। और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी जो एग्जाम के लिए रहता है वो बहुत अच्छा होगा, पैसेज रीडिंग जिसे कहते हैं। और एंड यू विल हैव शार्प मेमोरी होगी आपकी। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो इन सभी के लिए, आई प्रॉमिस ये सब आपके साथ होगा। और टुडे वी विल लर्न in this what are the contents inside this: title and theme, analysis of the poem, central idea, and easy concept grasping. This I promise, but be watch till the end. Title: in this poem, the poet talks to wind. The power of wind has been described, and the poet says that wind is destructive. He has linked the destructive power of wind to adversities of life and says that the weak people break down, but stronger people emerge out of adversities stronger. इसमें पोएम विंड के पोएट जो हैं कवि सुब्रमण्या भारती जो है वे विंड के बारे में बात करते हैं, और इसको उन्होंने हमारे दिनचर्या से लिंक कर दिया और कहा है कि कमजोर लोग सरवाइव नहीं कर पाते और जो स्ट्रांग रहते हैं, जो बोल्ड रहते हैं, वही बुरी स्थिति में भी जी पाते हैं, जैसे अभी कोरोना में भी देख रहे हैं। Now, theme of the poem. The poem gives an important message that we should be mentally tough and physically strong in order to survive the hardships of life. A weak person breaks down like a weak building and crumbles. We must take these destructive forces of our friends with our strength and determination. This is the theme, and usually in exam it comes to elaborate in 100 to 200 words. Then you must be able to elaborate this. इसमें poem करें mentally tough, which I already told, physically and mentally. From every aspect, we must be bold and strong to survive the situation, to collide the situation. Now about the poet Subramanya Bharati. Chinna Subramanya Bharati, also known as Bhartiyar, was a Tamil writer, poet, journalist, Indian independence activist, and a social reformer. And Indian independence activist मतलब वो नेशनलिस्ट है, उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना थी। उन ही वॉज पॉपुलरली नोन एज महाकवि भारती। बहुत अच्छे पोएट थे। उन्होंने हिंदू के लिए भी कितने सारे लिखे हैं। उनका अगर आप डिटेल में जाओगे इसमें, तो समरी के लिए छोटा सा दिया क्योंकि बहुत लोग को नहीं समझ में आता। अगर आप चाहते हैं टॉपर्स लेवल का एनालिसिस, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं टॉपर्स सीरीज का अलग स्पेशल वीडियो विथ फुल डिटेल बताऊंगा आपको। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तमिल लिटरेरी फिगर्स ऑफ आवर टाइम। बहुत ही बेस्ट बेस्ट तमिल राइटर थे, वो पोएट थे, और इनकी पोम बहुत है। और मेनली इसीलिए मैं पोए अबाउट द पोएट बना कि पोएट से या राइटर से आइडिया मिलता है कि उनकी स्टोरी किस चीज़ पे बेस्ड होगी। जो चीज़ किसी के लाइफ में वजह से, कोई हीरो है, मान लीजिए वो म्यूजिशियन है, तो उसकी स्टोरीज वो लिखे है, तो वो ऑफकोर्स म्यूजिक या उसके लाइफ की बायोग्राफी से रिलेटेड रहेगा। उसी तरह ये नेशनलिज्म की भावनाओं से रिलेटेड था, मतलब कि स्ट्रांग रहना। इसीलिए पोएम में है कि हम सभी को स्ट्रांग रहना चाहिए देश के लिए। नाउ द पोएट्री present poetry piece Wind has been composed by Subramanian. Yeah, already हम लोग जानते हैं। This poem consists of total 23 lines. These lines are not separated in stanza. Here they are divided into meaningful segments for ease of comprehension. या आसानी के लिए ऐसा लाइटर नहीं लिखा है ताकि लोग मैसेज समझ सके कि एकजुट रहना है, स्ट्रांग रहना है, वीकलिंग्स नहीं बन करना। हम लोग वीक थे तभी ब्रिटिश हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। Subramania Bharati has drawn the living picture of wind, which makes fun of the weak people or things. Means we Indians were weak, we were very wholehearted that we accepted the British as our administrative, but we must be strong and should oppose them. One must be oppressor and be bold. The poem teaches us how we should stand against our operations. In the poem, he presents the wind god who destroys everything weak. He ponders why the mighty god is fond of poking fun only with the weak. He says that while we worship so much of God, he must be helping us, but God also helps those who help themselves. This is the main idea of the poem, the central idea, you can say, and this is what the whole poem revolves all around. And this is the concept of wind god here, as we worship different forms of god, in the form of water, Varuna, in the form of rain, Indra, in the form of fire, Agni, in the form of Vayu. And this poem is all about wind god, the Vayu Deva, and what must be there.
Now, we must stand against our oppression. This is related to our, this the main theme is hidden here, that he couldn't write directly or couldn't poke at the British directly. That's why he written that we Indians must stand against our oppression, the British one. The poet therefore advises the weak like him or us, the Indians, to make to be strong from inner conscience. He suggests that to be strong physically and mentally both. Actually, the wind is a symbol of difficulties or obstacles that humans have to face for their revival, or another could be that it is symbol that we must be strong. It's a symbol of nationalism, that we must be strong and oppose the British as far as we could. Now, the poet, as we know, he has advised them and is a very well poem, and it is in a free verse. There is no rhyme scheme because it is freedom. When there was freedom, there was no not, poet thought that लोग कवि और लेखक सोचते थे कि कुछ भी बाउंड नहीं रहना चाहिए, सभी चीज फ्रीडम चाहिए, तो हमारी पोयम क्यों बाउंड रहेगी कि इस छंद में, इस राइम में, इसीलिए तो पोएम कैन बी, इस पोएम को हम लोग समराइज कर सकते हैं। फैक्ट जो सुब्रमण्यम भारती ने प्रेजेंट किया है उसे वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन वन थीम है। ऑल्दो द पोएट रिक्वेस्ट द विंड टू ब्लो जेंटली बट इट डज नॉट एक्सेप्ट द प्ली। विंड को मतलब हम लोग सोचो कि हम लोग बोलते हैं, ब्रिटिश को बोलते थे कि हम लोग जो चाहे वही, पर ऐसा नहीं होता था। विंड को ब्लो करने के लिए जेंटली बोलते हैं, पर ऐसा नहीं होता। द विंड ब्लोज वायलेंटली एंड कॉजेज डिस्ट्रक्शन। बहुत ही वायलेंट रहता है और हमेशा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है विंड। मतलब ये एक तरह से ब्रिटिश का था कि उन्होंने हमारा बहुत डेवास्टेशन किया, डिस्ट्रक्शन किया, वायलेंस किया, आपस में लड़ाई करवाई। ऑल दिस वाज फ्रॉम ब्रिटिश इन हिस्ट्री यू could read and the result of storm. The wind breaks the shutters of weak windows, it scatters the paper and throws down books on the shelf. This is all about the poem. I will give the behind poem extract in the last, and then I will explain first. This is all the explanation there, and I will explain which stanza has this explanation that I have summarized here. Son of Almighty Wind God. The poet has regarded wind as God, even we worship wind as a God. He says that he makes fun of the weak persons and things. The fast blowing wind destructs weak houses, weak doors, and weak bodies. It is of a destructive mind. Now, suggestion. The poet suggests us to build strong houses and strong doors. We must be strong from inside our body physically. We must be healthy physically and mentally. It will help the wind to be friend. To sum up the poem, people with strong physique and mind are able to stand and face odds and obstacles of life, the hardships of life, the difficulties of life. This is all suggested here. In the last of the poem, you will see that poet had concluded that we must make winds our friends so that we could cope up with the situation. We must be uh, able to grasp the wind's power. We must be able to bear the power, and so that we could live to the conclusion. Now, the poem lines are given in this what is in your textbook. Wind comes softly, don't break this. All these are the violence and destruction caused by wind. Then you will think that what we must do. It brought rain. What are the consequences it did? You bought trembling rain, crumbling bodies, and all these are devastating. He won't do what you tell him. उसको जो कहोगे वो नहीं करेगा वो. Let join the two firmly, and then it is given that what we could do, what are the prevention precautions that we can do. We could build strong houses, and that suggestion that we must be strong and to make friendship between that to cope up with instead of being weakly a weak thing. And this poem is a Tamil poem, as Subramania Bharati is a well-known Mahakavi Bharati is the best known Tamil figure in the field of writing and poetry. And here in this poem he has, ये जो poem है ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है ए के रामानुजन। इनकी स्टोरी हम लोग मोमेंट्स बुक में भी है, ये भी बहुत अच्छे थे, ये खास करके ट्रांसलेट बहुत अच्छा कर देते। इनकी भी एक पोम है, इनकी भी एक स्टोरी है जो इन्होंने ट्रांसलेट किया, जो हमें मोमेंट्स में पढ़ना है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ना थैंक यू, और प्लीज़ यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर, मुझे सब्सक्राइबर की सख्त ज़रूरत है, तभी तो मैं और अच्छे कंटेंट्स बना पाऊंगा आप लोगों के लिए। और ठीक है, टिल देन थैंक यू। Notes will be in the description.